Okay, so we were discussing that the gut tube is basically divided into three parts, and these three parts are foregut, midgut, and hindgut, right? And the folding of the embryo is exactly like we are just folding a pizza roll so that endoderm is incorporated inside. Now, the question where we stuck up, I asked a question that uh, the point where I have kept this arrow is what? Is it a foregut, is it midgut, or is it hindgut? Can anybody tell me? What would be this part where I've kept an arrow? This would be foregut, midgut, or hindgut? Midgut, excellent. Okay, and remember that this is the area where your umbilicus is. Okay, so umbilicus is connected to the midgut, and this is the region where, in other words, this would be the region which is converted into umbilical cord. पता है ना umbilical cord का? The part which is connecting the embryo to the placenta. Okay, the part which is actually connecting embryo to the placenta, and the embryo is getting its nutrition in the form of blood, oxygen, glucose, electrolytes, and the kidneys are also filtering. There are lots of functions which the placenta is performing. So this slide is just to make you understand how the endoderm is incorporated inside. आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है actually endoderm plus part of the umbilical vesicle is taken up inside, और फिर ये इसीलिए umbilicus is actually a natural defect. ठीक है, और umbilical hernia भी इसीलिए common होता है कि this is a natural defect when there is increase in weight या जो है कोई previous surgery हुई हो, so umbilicus is a potential defect where in future one can develop hernia. So this part, the proximal part which is connected to the buccopharyngeal membrane is foregut. The middle part which you can see is the midgut, and this is the hindgut. Practically speaking, the part which more grow is the midgut. ठीक है, midgut के derivatives भी ज़्यादा हैं, grow भी ज़्यादा करता है, and since it remains in the abdomen and it grows more, उसके पास space भी होता है. जो foregut है, that foregut has many important structures. ठीक है, so we'll be discussing what are the derivatives. This is another diagram to show you. I hope you can see this first diagram. This structure is the foregut, and you can see and appreciate the development of lung birds as well. ये आप देख सकते हैं liver grow कर रहा है, वो भी foregut से grow होता है, and then this is the midgut, and this part is the hindgut. Okay, allantois is an endodermal derivatives which later on degenerates. Allantois animals में important होता है, human beings में नहीं होता. ठीक है, so the area where there's a proximal area is known as the oropharyngeal membrane or future mouth or oral cavity, and this is the area where there will be cloaca, and the cloacal membrane will rupture in future and will form the anal canal. So these are the natural sites of opening in our body. Okay, so the most common questions which will be asked from you would be what are the derivatives of foregut, midgut, and hindgut. ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे? Are you with me? Derivatives of foregut, midgut, and hindgut, right? Okay. The next question asked would be what are the arteries of foregut, midgut, and hindgut? अच्छा, आपने stomach पढ़ा है, right? Can anybody tell me what is the blood supply stomach? जल्दी जल्दी से एक दो arteries के नाम बता दें. The blood supply of stomach. Okay, gastric, very good. Okay, left and right gastric, excellent. Okay, it's very easy to remember. 5 arteries are supplying the stomach. Left and right gastroepiploic, not epigastric, Maria. It is left and right gastro-omental or gastroepiploic भी हम कहते हैं, and then short gastric. 5 vessels, arteries supply कर रही होती हैं to the stomach, और उनकी जो है arrangement भी बहुत easy है. But if I ask you, okay, is stomach supplied by artery of the foregut or artery of, what would be your reply? Foregut, excellent, Alian. Means why foregut? Because stomach is foregut derivative. ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि the cecum is a midgut derivative, तो उसको कौन सप्लाई करेगा? Do you know what is artery of the midgut?
अच्छा, what is artery of the foregut? मैंने कहा stomach is supplied by the foregut. What is artery of the foregut? So let's begin the three principal arteries. Okay, very good, Mariam and Alian. The celiac trunk is the artery of foregut. ठीक है, जो भी foregut derivatives होंगे, they would be supplied by celiac artery. ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है derivatives, दूसरा आपको याद रखना है arteries. ठीक, so the derivatives is, this is the slide which you have to, you में समझ, मैं कहना चाहूंगी कि आपको इस पे याद करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस पार्ट ड्राइव हो रहा है एंड व्हाट वुड बी दी आर्टरियल सप्लाई. तो अगर आपको आर्टरी याद हो, आर्टरी का नाम, तो यू विल एग्जैक्टली रीच अप द डेरिवेटिव. और अगर आपको डेरिवेटिव याद होगा कि फोरगट से है, तो आप अल्टीमेटली सीलियक ट्रंक पे पहुंच जाएंगे. सो दिस टेल्स यू द आंसर ऑफ दोस टू क्वेश्चंस. ठीक है, जो बहुत कॉमनली, बल्कि हर दफा हर एग्जाम में ये पूछा जाता है. The first is what are the derivatives of foregut. ठीक, अब कौन से derivatives हैं? Start from stomach. अब हम क्योंकि GI की बात कर रहे हैं, तो I would be skipping the lungs and the lung trachea. ये derivatives मैं आपको नहीं बता रही, but actually respiratory system is also derived from the foregut. So foregut gives rise to stomach, esophagus, stomach, proximal duodenum, liver, gallbladder, and pancreas. ठीक है, तो if I ask you which artery will supply gallbladder, you would say artery of the foregut. Okay, then midgut gives rise to distal duodenum. अब आप मुझे बताएं कि what do I mean by proximal and distal duodenum? Small intestine आपने नहीं पढ़ा. Okay, let me tell you कि duodenum जो है वो दो total उसके 4 parts होते हैं. First, second, third and fourth. ठीक है, 4 ये parts होते हैं. The second part of the duodenum receives an important duct. Can anybody tell me what is that important duct? No, before I'm coming to it, you tried to reply. I really appreciate Ahmad and for both. But that division is not near the. Yes, excellent, Ahmad. That is bile duct. ठीक है, the entrance of bile duct. ठीक है, ये bile duct यूं duodenum में ओपन हो रही है. वकास, मुझे अपनी वीडियो नजर नहीं आ रही, नहीं आएगी. अच्छा, वो असल में मैं सामने देखती हूँ कि मैं किस तरह पॉइंट करती हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा. अच्छा, this is as if the bile duct is opening. Proximal to that, this is derivative of foregut, and distal to that, this is derivative of the midgut. So that's the second part of the duodenum. मुझे अपना मतलब अपनी शक्ल नजर आए, आ सकती है इस पे. अच्छा, good, thank you. Okay, so I was just telling that this is the point of entrance of bile duct. ठीक है, proximal to that, ये जो duodenum है, that is derived from the foregut, और distal to the entrance of bile duct, ये portion जो है derived from midgut. ठीक है, तो अब duodenum is a structure यूं होता है C shape. ठीक है, C लग रहा है ना ये, this is C shape. ठीक है, C shape structure of the duodenum. यहाँ पे bile duct की entrance होती है. ये पोर्शन ऊपर वाला जो स्टमक की तरफ जा रहा है, ये दिस वन इज ड्राइव फ्रॉम फोरगट, और ये पोर्शन है दिस वन इज ड्राइव फ्रॉम द मिडगट. तो proximal to this portion, this is supplied by artery of the foregut, means a branch of celiac trunk, and this portion was supplied by artery of midgut. So these are the three arteries which are considered as artery of the foregut, midgut, and hindgut. Artery of foregut is celiac trunk, artery of midgut is superior mesenteric artery, and artery of hindgut is inferior mesenteric artery, right? So agar aapse pucha jaye ki sigmoid colon is supplied by which artery, what would be your reply? Sigmoid colon is supplied by which artery? Voice is not clear. Okay, yes, inferior mesenteric, very good. Who cannot listen me? Simran, can you hear me now? Yes, artery of the hindgut or inferior mesenteric artery would be supplying the sigmoid colon. Okay, if I ask which artery would be supplying appendix, hurry up. I'm telling you, Maria, what is sigmoid. Urfa, voice is not clear. Is it interrupted or slow आ रही है? मैं बोल तो बहुत तेज रही हूँ.
Okay, appendix is supplied by artery of the midgut. Okay. Um, we have some internet issue today. थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें. I mean slide पे भी देख लें. You would understand it. Okay. We'll be repeating it. ठीक है. जो next मेरी क्लास आएगी मैं आपको ये सारी चीजें दोबारा थोड़ा सा दे दूँ. जो आपको समझ ना आए आप एडमोडो पे भी मुझे पूछ सकते हैं. तो shall I move on? या बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा? Shall I move on? Okay, good. Okay, thank you so much. थोड़ा सा ये कि आप स्लाइड पे देखेंगे ना सेंटेंस मेरा समझ आ जाएगा. ठीक. So आपको क्या याद रखना है? बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगी कि what are derivatives of foregut, what are derivatives of midgut. Yes, I am repeating. And what are derivatives of hindgut. अच्छा, मुझसे मारिया या उर्फा ने पूछा था कि what is sigmoid. Sigmoid का मतलब होता है S shape. S for साइमा. ठीक है. S shape. S shaped क्यों कहते हैं? क्योंकि sigmoid जो colon है ये आप देख रहे हैं. This portion is sigmoid. ये S शेप होता है. अगर आप यूं शुरू करें यहाँ से तो ये रफली लगता है कि एस है, इसीलिए तो ये वैसे ऊपर खींचा गया है, लेकिन नॉर्मली द सीकम इज हियर. सो सीकम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कोलन? आई एम जस्ट यू. सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. These are all parts of the large intestine. ठीक है. तो sigmoid colon is S shaped. That's why we call it as S. ठीक है. Clear, Urfa and Maria, whoever asked me the question. अच्छा, दूसरा किसी ने पूछा कि artery of midgut में repeat कर दूं. Okay. Yes, all the derivatives of foregut, they are supplied by artery of the foregut. ठीक है. Yes, the artery of foregut is celiac trunk. All the derivatives would be supplied by the branches of the celiac trunk. ठीक है. 3 main branches होती हैं celiac trunk की. Left gastric, common hepatic and splenic artery. ठीक है. ये 3 main branches होती हैं. इसी तरह ये superior mesenteric artery की बहुत सारी branches होती हैं. Inferior pancreaticoduodenal, then it is right colic, middle colic, and then ileocolic. जेजुनल आर्टरीज, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं. वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल विद ग्रॉस एनाटॉमी. अब आपको इस वक्त एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आपको मतलब याद करना है कि सीलियक ट्रंक इज सप्लाइंग ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फोरगट. जो आप डार्क कलर देख रहे हैं ना, अप टू दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम वेयर द फोरगट एंड्स. ठीक है. यहाँ तक सीलियक ट्रंक सप्लाई करेगा. फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से लेके duodenum, jejunum, ileum, appendix, cecum, ascending colon, hepatic flexure and transverse colon. अब कहाँ तक transverse colon supply होगा? Proximal to the transverse colon. ठीक है. Proximal two-thirds of the transverse colon will be supplied by artery of the midgut, that is superior mesenteric artery. फिर जो डिस्टल थर्ड है, जो लेफ्ट साइड पे स्प्लीन के करीब जो कोलन का छोटा सा पार्ट होगा, डिस्टल थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन विल बी सप्लाइड बाय hindgut. ठीक है. आर्टरी ऑफ द hindgut and that is inferior mesenteric artery. Is it clear? Say yes or no. Good. So the distal third of the transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, they are supplied by the arteries of the artery of the hindgut. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? What are derivatives of foregut, midgut and hindgut? Okay, very good, Maria. Crystal clear means you have understood. That's excellent. अच्छा, number second पूछा जाएगा आपसे कि tell the organs which have dual blood supply. Two arteries are supplying the organs. What are those organs? $1 million question. The organs which are supplied by dual arteries. We are talking about GIT, so we don't go up to lungs. Nahin Chaudhary Saab, this is wrong. Duodenum, axilla and fissure, and the second is colon. Which part of the colon? Which part of the colon? Transverse colon, right? So transverse colon and duodenum, they both are supplied by dual arteries.
रहा, और क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम मार्क्स द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। तो इसको आर्टरी ऑफ, इसको सीलियक ट्रंक भी सप्लाई कर रहा है एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी सप्लाई कर रही है। कम बैक टू द ट्रांसवर्स कोलन, इट इज सप्लाइड बाय द आर्टरी ऑफ द मिडगट एंड आर्टरी ऑफ द हाइंडगट एज वेल, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स हैं जो जिनको ड्यूअल ब्लड सप्लाई, एनल कैनाल को भी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, यहाँ तक आप समझ लें, दैट्स यू नो क्वाइट सफिशिएंट, ठीक है। Okay, great. So we are clear about the derivatives of foregut, midgut, and hindgut. We are clear about the arteries which are supplying the foregut, midgut, and hindgut. We are clear about the organs which have well blood supply. Which we are clear about the organs where there is junction of foregut and midgut and hindgut. Okay. I hope we are clear about all these points. Okay. Another diagram where you can see, अच्छा पहले ट्यूब होता है, वो ट्यूब फिर ग्रो करता जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इसोफेगस बन गई, स्टमक बन गया, लिवर एंड गॉलब्लैडर, और ये ड्यूडेनम, ये फोरगट बन गया। अच्छा उसके बाद फिर मिडगट इनॉर्मसली इंक्रीज होती है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड व्हाट इज द साइज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? Can anybody tell me what is the size of small intestine? 2.5 centimeter. 2.5 centimeter is this one. Small intestine. आप जो सारा दिन इतना खाना ठूसते रहते हो, 2.5 centimeter में जाएगा. 9 centimeter, 9 inch. Okay, great. Let me tell you, what is your height in meters? Can anybody tell me? जी, Mr. Shadil, आपकी height कितनी है in meters? It's not 6.9 meters. You would be a giant rover. Okay. Okay. Zafar साहब आप 18 inches के हैं. अच्छा, चले 7 meter. Okay. 6 meter is the length of small intestine. और large intestine की कितनी है? 0.5 meter. ठीक है? Small intestine. Okay, I got it, Zafar. I just said it. 18 inches is not. Okay? The length of the small intestine is 6 meters. कितनी है? 6 meters. तो पता नहीं कितने हुए. 6 meters is the length of small intestine. और large intestine की length मैंने क्या बताया? Large intestine is 1.5. तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब small intestine 6 मीटर है, तो हम large intestine को large क्यों कह रहे हैं? intestine कहना चाहिए ना? सोचना चाहिए. Okay? So this is your homework. I'm not going in detail. So this is foregut, and this is midgut, and this is the hindgut. You can see the arteries which are supplying. Okay, so this was the first point which I discussed, that endoderm actually forms. Okay, very good. Manur, yes, that's Hera. That is because of the caliber. ठीक है, caliber की वजह से हम large intestine को large कहते हैं और small intestine को small कहते हैं, सिर्फ diameter की वजह से. ठीक है? Okay, that's excellent. So endoderm actually forms the epithelial lining of the digestive tract and the glands or specific functional part. अगर liver है तो hepatocytes, they are formed by the जो भी gland होता है उसके दो parts होते हैं. You tell me what are the parts of the gland? Gland के दो parts होते हैं. कौन से parts होते हैं gland के? आपने gland की histology पढ़ी है. Gland के दो main मतलब ये है कि दो proper parts होते हैं, उसको क्या कहते हैं? Parenchyma, very good, and neck and body. No, parenchyma and stroma, very good. Yogita and yes, किसी और ने भी जवाब. Neck and body is actually वो जरूरी नहीं है सब glands में, वो तो आप morphology बता रहे हैं. Microscopically, when we talk, that is the functional component, which is parenchyma of a gland, and then stroma. Stroma is actually the supporting tissue of a gland. So the functional component or parenchyma of liver, for example, is derived from endoderm, and the stroma, which is the you समझ लें supporting tissue, would be derived from the splanchnic mesoderm. So muscle and connective tissue, they would be derived from splanchnic mesoderm, while the parenchyma or functional component would be derived. This is throughout the GIT, okay, not only for liver. This is throughout GIT.
So we have discussed the derivatives. Now, another important thing which I want to tell you is that how the abdomen is divided into thorax, the trunk is divided into thorax and abdomen by the diaphragm. ठीक है? अब diaphragm के नीचे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. डायफ्राम डेवलप होता है फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सोमाइट्स आते हैं, फिर प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड्स आते हैं, और फिर सेप्टम ट्रांसवर्सम आता है. All these structures mix up and then they form a partition between the thorax as well as the abdomen. So that is called the diaphragm. Now there are two main structures. ठीक है? अच्छा, यूं समझ लें कि हाँ, this one देखें, ये ट्यूब है. ठीक है, हमने कहा कि ये गट ट्यूब है पूरा. दिस वन इज फोर गट, दिस वन इज मिड गट एंड दिस वन इज हाइंड गट. अच्छा, अगर बॉडी में ये फ्रॉम माउथ टिल एनस होता, ऐसे ये ट्यूब होता, तो इसको कनेक्शन चाहिए था, वरना तो ये नीचे गिर जाता इस तरह. ठीक है, गिर सकता है ना व्हेन देयर इज नो कनेक्शन. सो हाउ दिस ट्यूब, हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा स्टमक नीचे गिर जाता है, नहीं गिरता ना. इट इज अटैच्ड. हाउ इट इज अटैच्ड टू द बॉडी? इट इज एक्चुअली द मेसेंट्री. ठीक है, अब मेसेंट्री किस तरह ड्राइव हुई? मेसेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. यूं समझ लें, दो पर्दे हैं जो इस ट्यूब को जो है होल्ड कर रहे हैं. ये ट्यूब है और ये एंटीरियर बॉडी वॉल है और ये पोस्टीरियर बॉडी वॉल. ठीक है, तो जो इस ट्यूब को एंटीरियर बॉडी वॉल को ट्यूब कनेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज, दिस पार्ट इज नोन एज वेंट्रल मेसेंट्री. ठीक है, और जो पीछे की तरफ जो ट्यूब को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच कर रहा है, दैट इज नोन एज डॉर्सल मेसेंट्री. क्या कहते हैं इनको? वेंट्रल मेसेंट्री इज द पार्ट of the mesoderm which is connecting the gut tube to the anterior abdominal wall, ताकि ये नीचे गिर न जाए. होल्ड, इट इज बीइंग होल्डेड बाय द मेसेंट्री. ठीक है, इंटीरियरली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से. तो पूरा का पूरा ट्यूब यूं होल्ड है. फिर ये ग्रो करता है, स्टमक बन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाता है, और इसी के साथ मेसेंट्री भी ग्रो करती है. एक तो ये फंक्शन है मेसेंट्री का, इट इज होल्डिंग. नंबर सेकंड, कि जाहिर है गट ट्यूब एंडोडर्म से डेवलप हो रहा है, तो एंडोडर्म में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड से डेवलप हो रही होती है. बकास टाइम कितना हुआ है? हो गया? should I continue or should I end? नहीं, जैसा पूरा करा लो, मैंने करवा सकती हूं, मैं इस पे एंड करूंगी. ठीक, ओके. सो repeating this point, बस आप ये समझ लें, बल्कि थोड़ा सा सुमरन try to read it. What is ventral mesentery and what is dorsal mesentery? This is your homework. ठीक है, everyone, did you get your homework? Just try to understand what is ventral mesentery and dorsal mesentery. In my next class, I'll be explaining it in detail. Don't worry, I'll cover it. Is it okay? Thank you so much. We are ending this meeting. Inshallah, we'll continue.